Constitutional Law 1 Topic 5 Fundamental Rights, Articles 12 to 35. Fundamental rights are the basic human rights guaranteed by the Constitution of India to all individuals. They are enshrined in Part 3, Articles 12 to 35, and are essential for the development of every citizen and the maintenance of democracy. These rights are justiciable, meaning they can be enforced by courts if violated. Article 12 definition of state includes the Government and Parliament of India, Government and Legislature of states, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India. This definition is important as fundamental rights are primarily enforceable against the state. Article 13 Judicial Review declares that laws inconsistent with fundamental rights shall be void. It establishes the doctrine of judicial review in India. Categories of Fundamental Rights 1. Right to equality, Articles 14 to 18. Article 14 Equality before law and equal protection of laws. Article 15 Prohibition of discrimination. Article 16 Equality of opportunity in public employment. Article 17 Abolition of untouchability. Article 18 Abolition of titles. Right to freedom, Articles 19 to 22. Article 19, 6 Freedoms, speech, assembly, association, movement, residence, profession. Article 20 Protection in respect of conviction for offences. Article 21 Protection of life and personal liberty. Article 21 A right to education. Article 22 Protection against arrest and detention. Right against exploitation, Articles 23-24. Article 23 Prohibition of human trafficking and forced labour. Article 24 Prohibition of child labour. Right to freedom of religion, Articles 25 to 28. Article 25 Freedom of conscience and religion. Article 26 Freedom to manage religious affairs. Article 27 Freedom from taxes for religious purposes. Article 28 Freedom from religious instruction in educational institutions. Cultural and educational rights, Articles 29 to 30. Article 29 Protection of language, script, and culture of minorities. Article 30 Right of minorities to establish and administer educational institutions. Right to constitutional remedies, Article 32. Empowers individuals to move the Supreme Court directly to enforce their fundamental rights. Also called the heart and soul of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. Writs under Article 32 and 226. Courts can issue writs for enforcement of fundamental rights. Habeas corpus, produce the body. Mandamus, we command. Prohibition, to forbid. Certiorari, to be informed. Quo warranto, by what authority? Reasonable restrictions. Fundamental rights are not absolute. The state can impose reasonable restrictions on the exercise of rights in the interest of sovereignty, public order, decency, etc. Conclusion. Fundamental rights are the backbone of the Indian Constitution. They ensure individual liberty, equality, and dignity, forming the basis for a democratic and inclusive society. Articles 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. ये हर सिटीजन के लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स है. इन राइट्स का पर्पस है इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को एंश्योर करना. आर्टिकल 12 स्टेट का मतलब सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स और लोकल अथॉरिटीज भी है. आर्टिकल 13 अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो इनवैलिड होगा. यही है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट. कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स. राइट टू इक्वालिटी, आर्ट 14-18 सबके साथ बराबरी का व्यवहार बिना भेदभाव के. राइट टू फ्रीडम, आर्ट 19-22 भाषा, मूवमेंट, प्रोफेशन जैसे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्ट 23-24 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर पे रोक. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्ट 25-28 अपने धर्म को मानने, प्रैक्टिस करने की आज़ादी. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्ट 29-30 माइनॉरिटीज को अपनी कल्चर और स्कूल्स मैनेज करने का अधिकार. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्ट 32 अगर किसी का राइट वायलेट हो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था. रिट्स, आर्टिकल 3226 के अंडर हेबियस कॉर्पस किसी को इल्लीगली डिटेन किया हो तो कोर्ट बुलाती है. मैंडेमस कोर्ट किसी अथॉरिटी को काम करने का ऑर्डर देती है. प्रोहिबिशन लोअर कोर्ट को केस सुनने से रोकती है. सर्टियराई केस ऊपर के कोर्ट में ट्रांसफर होता है.
क्वो वारंटो किसी से पूछो जाता है कि तुम किस अथॉरिटी से ये पोस्ट होल्ड कर रहे हो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, मोरालिटी के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। कंक्लूजन, फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेसी की बैकबोन है। ये हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं और एक इंक्लूसिव इंडिया बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी लीगल ज्ञान मिस ना करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। और हाँ, अगर आपको फुल नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में तो कमेंट करें अपना ईमेल ID या लिखें नोट्स, हम भेजे देंगे।